नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और कभी-कभी हम देखते हैं कि जीवन के जो रंग हैं, वो जब एक साथ घुल-मिल कर हमारे सामने आते हैं, उनको व्यवस्थित करने के लिए एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति हो जाती है। ख़ास करके कुछ ऐसी चुनौतियाँ जो हमारे शरीर में इस तरह से बढ़ गई होती हैं कि उसकी रोकथाम करना न केवल मरीज़ के लिए मुश्किल होता है, उस स्थिति में उनको देखना परिवारजनों के लिए भी बड़ा एक कष्टकारी यात्रा होती है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो उस सारे अनुभव की यात्रा को न केवल साहस से अपनाएं, बल्कि उसके बाद भी जो एक जीवन का उत्स है उसके साथ अनुनादित न केवल स्वयं होते हो, बल्कि अपनी कला के माध्यम से औरों को भी करते हो। मेरी कार्यक्रम में भी सहयोगी रही मेरी मित्र, तो एक आत्मीयता का भाव। लेकिन जब हम एक मनुष्य की यात्रा को देखते हैं, तो ऐसा लगता है थोड़ा दूर होकर हम उनको, उनके भीतर की शक्ति को थोड़ा और पहचान पाते हैं। क्या बात कर रहा हूँ मैं? क्या संबंध है इसका कैंसर से? जानते हैं गीता जी से। गीता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्कार अशोक जी, धन्यवाद बहुत बहुत। तो धन्यवाद आपका, क्योंकि मैंने ये आग्रह आपसे किया, हमारे दर्शकों में से कोई और ऐसी स्थिति के आसपास से निकले जहाँ चुनौती ऐसी आए जिसको लेकर मनुष्य टूट जाता है, तो आपके बारे में याद करेंगे तो उनको थोड़ी और शक्ति मिलेगी। पर आपकी यात्रा की शुरुआत करने में मैं सहारा लेता हूँ एक वीडियो का, और फिर आप बताइएगा कि ये वीडियो क्या संदर्भ के साथ जुड़ा है। This bell 3 times bell. It's told to clearly say my treatment's done. Yes, the course is run, and I'm on my way. Now, Absolutely. Now ring it Up. really hard. Yay! Well done. Beautiful. तो ये जो घंटी के नाद था, इसके साथ हम चूंकि जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, तो मंदिर का घंटा भी है, और बिल्कुल। जीवन अपने आप में मंदिर है, पूरी सृष्टि जो एक मंदिर है। पर वहां से शुरू करते हैं, जब आपको पता लगा कि ये कुछ ऐसा है जो इस तरह के सिम्टम जिससे होते हैं कि बाल भी झड़ने लग जाते हैं। हालांकि तस्वीर में भी आपके चेहरे पर मुस्कान है। हाँ, तो मुस्कान जरूरी है अशोक जी। जी बताएं, कब पता लगा? मेरे को लास्ट जून तक मेरे को कोई आइडिया नहीं। आई वॉज बिल्कुल नॉर्मल, सब कुछ एकदम। बट माई हस्बैंड वांटेड टू डू माई ब्लड टेस्ट ओनली बिकॉज उन्होंने कहा फैमिली में तुम्हारे डायबिटीज है, so let me see. So I said, you know what, let me eat good for some time, then we'll do it. Then I told him, I said, do it now. I want to show you क्या बढ़िया होता है, देखो आता है जब आप ठीक ठाक खाओ तो। And lo behold, I had something in there जो उनको लगा कि further testing is needed. He is a physician, so he could figure it out. So cut story short, CT scan कराया, उसमें निकला obviously I was breast cancer stage 2, the beginning of it, but it had gone in 1 or 2 of my lymph nodes. वो भी affected थे. So मुझे कुछ नहीं मालूम इस बारे में. Sometimes you feel ignorance is a bliss. पहला step होता है denial. I said हो ही नहीं सकता. This is somebody else. The way I am, I have never seen a doctor in my life, and I have been fit, take care of myself. I eat right, exercise. There's no way, I said. फिर आपको धीरे धीरे यू हैव नो चॉइस बट टू कम टू रियलाइजेशन कि देयर इज समथिंग। फिर भी मैंने सीरियसली, पता नहीं लाइफ में या तो भगवान की दया भी रही है, मैं कहूंगी, मैं तो दया ही कहूंगी कि आई डोंट टेक एनीथिंग वेरी सीरियसली। फॉर मी इट्स लाइक ओके है तो ठीक है, लेट्स सी द डॉक्टर क्या कहते हैं। एंड द अदर थिंग इज आई डोंट गो इनटू गूगल करो क्या है कैसे है क्यों, मैं अपना दिमाग नहीं उसमें खराब करती। डॉक्टर्स नो देयर जॉब, find a good one and then go with them. So we met the surgeon, we met the oncologist, Memorial Sloan Kettering, and they guided me. They told me this will be the course. They'll be doing the chemo, then
surgery, then radiation. And I went with my पूरा उसके साथ कि ठीक है. तो यहाँ से वापस चलेंगे, थोड़ा पीछे चलता हूँ मैं। Mhm. जैसे आपको पता चला था, उसके ठीक पहले आपका एक एल्बम आया था, फिर आपने एक म्यूजिक Oh, yeah. वीडियो भी शूट किया था। तब आपके बैक ऑफ द माइंड यू आर अवेयर दैट यू आर गोइंग टू बी एंटरिंग इनटू अ फेज वेयर यू वोंट बी एबल टू नॉर्मली परफॉर्म। Yes. मुझे ये क्योंकि जून में मुझे मालूम चल गया था and I was filming for my album का song and I wanted to then rush it because मुझे मालूम था कि after a certain date, once the chemo के दिन आएंगे पास में, I won't be able to shoot. So we really, me and my uh, person who recorded me, Kripa Ranjan ji, he really worked with me पूरी, एंड हमने लग के पूरे 8-9 दिन पूरा शूट अच्छे से किया प्रॉपर, एंड नोइंग कि दिस विल बी अराउंड द टाइम. एंड उसमें एक जो थोड़ा चैलेंजिंग रहा मेरे लिए, जो मुझे लगा कि August 4th was the release of my song, एंड उससे पहले मेरी 2 कीमो हो चुकी थी और उन्होंने मुझे कहा था कि यू विल बी लूजिंग योर हेयर आफ्टर दैट. एंड फॉर वट एवर जिस तरह से वो आया सब, कि 4th को was the first day when my song is releasing on one hand and I am like super happy about it, and दूसरी तरफ I'm in the shower and my hair is in my hand. So that was a little, बड़ा mix of emotions for me, कि एक तरफ इतनी खुशी और एक तरफ देख के एकदम, you're startled. But then I'm like, okay, just go on. तो वो गीता जी, पिक्चर भी जो आपने दिखाई वो भी तभी की है. हम्म, I said, you know what? Let's enjoy the baldness also. So makeup वगैरह कर करा के I took my selfies. I said, so be it. So ये जो इसको हम कहें ढंग है जीवन को अपनाने का, वो बहुत मुश्किल से विकसित होता है। उसके पीछे एक तो कृपा बात कह दीजिए, एक चिंतन रहा होता है, जीवन को समझने की अपनी एक अंदरूनी यात्रा रही होती है, जिसके बाद में भी ये होना बहुत मुश्किल है। कई बार जो ज्ञान होता है वो पचता नहीं है, वो आगे सही बात. परिस्थिति आती है तो वो नहीं आ पाती। पर इन ऑल सीरियसनेस, none of us is going to be here for all the times to come, Exactly. and most of us forget it. And that is also normal and natural. But in your case, when you came across a state where you were this close, there of course were chances that you are going to overcome it. Yet somewhere in your inner dialogue, were you ever thinking that what if? Never an option. दिया ही नहीं अपने को. Somehow that's what I'm saying, कि that positivity कह लो, जो भी कह लीजिए आप, ये मेरे दिमाग में आता नहीं है कि होगा नहीं. जिंदगी में कभी नहीं आया, किसी भी चीज के लिए नहीं आया. Anything and everything I feel if somebody has done it, it's doable. मुझसे पहले भी, मेरे बाद भी. सो एक अपनी एकाग्रता बना पाना, उस पे काम जरूरी है. और ये ऐसे है अशोक जी, जैसे टेनिस में खेलती थी तो बोल रहे थे यू कैन प्रैक्टिस एज मच एज यू वांट, टिल यू प्ले अ मैच यू वुड नॉट नो हाउ फार एंड हाउ मच यू कैन डू. एंड दिस वाज absolutely a match for me, where I am a very strong person normally, I think, and कर लेती हूँ मैं सब कुछ, but it does take its toll. ये जो आप दिखा रहे हैं, ये right after my radiation, thanks to my daughter who's an oncologist, she was after me. She said, Mom, even during the chemo and all, get up, do something. You'll be ahead of the game. नहीं तो you lose your muscle, क्योंकि आप लेटे हुए हैं सारा टाइम. So she forced me to do some kind of exercise. She said, you must do, Rose. Push karo apne ko. And I did. And this was the result of that, that this is right after my radiation, right after my treatment finished. So thanks to Dr. Natasha also. Yeah, In I addition to thanks to each and everyone, including Dr. Deepak Setia ji, who was also and is a source of strength for you, including Seema and Sonia, and of course all the family members. But absolutely. You included, Ashok ji. thank you, thank you.
So let You me included too. let me also request you Mm. to share when that chemo is dreaded by most of the people. It's not an easy experience to be passing through that. So, Mm. first time, second, how many times did it take? I went through 8 cycles Hmm. of chemo, and 4 and 4. And this is obviously everybody knows it's a strong medication. So for me, ये एक आप अपनी अपनी आप रूट्स पे चले जाते हैं ऐसे टाइम पे। मैंने कभी लाइफ में करा नहीं था पहले इतना शिद्दत के साथ, बट आई मेड अ प्लेलिस्ट फॉर माई सेल्फ of all the stutis and everything, शिव स्तुति and गणेश स्तुति and हवन मंत्र, वो सब बनाए हुए थे लिस्ट में. And the moment before they would put that IV in my arm, I would tell them, "Can you hold on for a minute?" And I would put that playlist on. So it would start from that. And अशोक जी, क्या मैं कहूँ, कितना इनमें इनमें स्ट्रेंथ है जो मुझे कभी जिंदगी में नहीं मैंने सोचा था. आई न्यू कि दे आर मीनिंगफुल मंत्रास एंड ऑल, बट आई डोंट नो उस टाइम पे मुझे इतनी शक्ति ये मंत्र देते थे. आई वुड स्टार्ट द मंत्र इन माई ईयर एंड आई वुड जस्ट गो इन माई जोन कि अब आप कर लीजिए. एक संगीत में भी वो शक्ति है जिससे मैं बहुत प्रेरित रहती हूँ. तो मुझे तो एकदम नाद में जैसे खो जाती थी. एंड दैट वाज म्यूजिक रियली हेल्ड माई हैंड इन दैट पूरा टाइम. थोड़ा गुनगुनाती रहती थी साथ साथ में, थोड़ा सुनती रहती थी. इट वाज, तो इसलिए मालूम नहीं चला. तो जो पहली बार जब कीमो हुआ था, तो उसको अगर आप याद करती हैं तो आई मीन वन कैन इमेजिन इट मस्ट हैव बीन पेनफुल. हालांकि वो जो एनेस्थीसिया लगाते हैं वो अपनी जगह पर होता है, एंड उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी रहते हैं बॉडी के ऊपर. शेयर. फर्स्ट टाइम में नहीं होता अशोक जी, क्योंकि फर्स्ट टाइम में व्हेन दे गिव, इट्स अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट. सो आफ्टर थर्ड एंड फोर्थ यू स्टार्ट फीलिंग इट. फर्स्ट में तो दे गिव एंड दे गिव स्टेरॉइड्स साथ में, so which holds on for 2 दिन, अगले 2 दिन. So I took the chemo and I was telling my husband, I said, I can run home. You feel so normal and good. Third day you start feeling thoda sa, but not so bad. It's after the third chemo you start ekdam, it knocks you. And in my case, I developed shingles, I developed Bell's palsy, which I'm dealing with, which is going on. So slowly, it's working, but it takes time. And I was the one who always used to say, God grant me patience, but please hurry. So God had his way of teaching me, patience is needed. थोड़ा बैक ट्रैक करते हैं. अगेन, ह्यूमन माइंड वर्क्स इन डिफरेंट वेज, एंड देयर आर few which would respond differently. And मैं लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूँ. You, as everyone knows, are conscious of your diet as well as regular exercise, tennis to walking to running to whatnot. तो ऐसा बंदा जब इस सिचुएशन में जाता है तो उसके माइंड में आता है कि मुझे क्यों हुआ, मतलब आई मीन बिकॉज आई एम कीपिंग कंप्लीट फोकस ऑन व्हाट आई ईट एटसेट्रा. तो फिर डॉक्टर से डिस्कस होता होगा या नहीं, आई डोंट नो, बट व्हाट जनरली पीपल वुड थिंक कि मुझे क्यों हुआ. आप ऐसा कभी? See, there's environmental reasons also. Mera genetics is not there, family history is nothing, absolutely nothing around. So it is actually key. Then what happened? So then they attribute it to the environment also. Ki the way we live, Long Island has a big history of breast cancers, they say. That is another thing. But to be honest with you, I never think of कि मुझे क्यों हुआ. कि इसके मेरे लिए मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ये सोचती हूँ तो इसका मतलब ये है कि किसी और को तो मैं सोच सकती हूँ. मैं किसी और को नहीं सोच सकती, ना मैं सोचना बिल्कुल चाहूंगी. कभी लाइफ में नहीं हो किसी के साथ वो स्थिति, having gone through that. So that never came to me कि मुझे क्यों हुआ. Things happen. I believe in God and I believe in whatever He gives. All I ask Him is कि संभाल के रख लेना.
That's it. So that is never, that faith is, was there, is there, and I think will be there. I never lost faith in that. So that never came to me. किसी को भी क्यों हो, मुझे क्यों हुआ मतलब कि किसी और को हो जाए, हम्म, कभी नहीं, never. आई थिंक जो ये चैलेंजिंग मोमेंट्स होते हैं, सिचुएशन होती है, उसमें फेथ बना रहना स्पीक्स अ लॉट अबाउट द इनर सब्सटेंस, या बंदे का कैरेक्टर कह दो, या जो भी है, या इंटेग्रिटी कह दो, इन वंस कन्विक्शन. उसमें जैसे आपने कहा मंत्र वगैरह से बहुत बहुत एक करंट फ्लो होता था, जैसे स्ट्रेंथ का, या ऐसा. एक वो अंदर है ही, मतलब कि अंदर ही है, 24/7 है, जोड़ता भी वो है, तोड़ता भी वो है, ऐसा मेरे को, मेरा मानना है. तो वी कैन ऑलवेज ओनली प्रे फॉर द सद्बुद्धि, एंड बस ये मेरी प्रेयर रहती थी कि भगवान मुझे सीधे रास्ते पे रखना, मेरी सोच गलत मत करना. बट दिस इज अनदर वन दैट यू आर शोइंग नाउ. I just wanted to give you a background. So this was my third chemo I had gone for. And I'm like, I love taking pictures. So मैं उस स्थिति में भी, I told the nurse, I said, can you take a picture? And she just looked at me ki, wow. मतलब she had never heard that. And she's like, good for you. I said, I'll just document it because one day I want to talk about this. So she took it and they were telling me in memorial, they said, you know, we would recommend you to come here and talk to the patients about that, which I did, incidentally, Oh, to just keep that going. This is normal for me. For me, TV, camera, pictures, these are normal things for me, I feel. So I think maybe I wanted that. I don't know. But I wanted the pictures. Of every time I would go, I would finish it. I have pictures from every time. Okay, I finished second, I finished third, I finished fourth. And that's how it went. So kept going with the things that were working for me. so now I'm also at a loss in sort of how to weave further, and it, it doesn't sound very good, but let me just mention that cancer and this chemo, it affects your physical appearance also. And most Absolutely. of us are conscious nowadays more than what we used to. So how was it to look at your face in the mirror and see that this is a different Gita that is now looking at me? And then also at the backdrop, you are aware that it is the spirit that is actually Gita. It is not just the Absolutely. appearance. But talk to me, how did you process it, and uh, the courage to sort of go in front of the people again and sing on stage? How was that journey steps? So the first thought, Dell, I mean, the why cancer becomes so scary is also it's not only inside what it's doing, which is obviously very uh, काफी ज्यादा करता है अंदर, but your appearance changes. You lose your hair, you lose your eyelashes, you lose nails also to a certain extent. So you can see everything. You know, every time you look in the mirror, you see the change. And that can be daunting. So I stopped. I said, you know, why do I have to look at the mirror every single time? वही हूँ जो थी. उसके बाद इजी हो गया. वो तो जो देखेगा वो देखेगा. मैं तो नहीं खुद को अपने को अंदर ऐसे देख सकती. सो देख के भी कुछ लोग उनका होता था ऑब्वियसली रिएक्शन, एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल, यू नो, कि ओ माय गॉड व्हाट आई वुड बी लाइक फॉर अ मोमेंट आई वुड फील, एंड देन आई वुड टेल माई सेल्फ इट्स ओके, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ. अपने को ये बोलते रहना, इट्स ओके, मूव, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, दिस डजंट डिफाइन मी. माई इनर स्ट्रेंथ डिफाइंस मी, माई सिंगिंग डिफाइंस मी. मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने एक जगह गाया थोड़े टाइम पहले, एक महीना 2 दिन पहले. दे आस्क्ड मी टू सिंग समथिंग. I sang and people came after me and they said, you know what, we didn't recognize you by looking at you. But when you started singing, we said, oh my God, that's her voice. To me, I felt so good with that. And that's the one thing I asked doctor when they were doing the surgery. I said, will it affect my vocal cords in any way, even radiation? They said, no, no. And they were shocked that that was my first
concern and question कि मेरा संगीत तो नहीं छूटेगा कहीं से. And then I said, rest I can take care of. हम हमारी बातचीत का समापन आपसे गाने का कुछ आग्रह करके करेंगे, पर उससे पहले you mentioned that you went there and kind of shared your journey with those who are dealing with the cancer. How was it? And you are a good speaker also. Did you sort of frame the step-by-step way in which what you are going to say, or you allowed it to flow the way it was? Also, what was the response of, and any one question that stuck with you, which if somebody asked you? I let it flow. I'm not a preparing kind, generally. I don't go into the topics where you have to prepare a lot. I come out straight from heart about these issues, whatever comes to me. And मुझसे ज़्यादा लोगों को inner strength मेरी ज़्यादा दिखी. For me, this is how I am. I don't like to be afraid of anything in my life. I don't want to put my mind into that key. This is scary. Then I like to face it. Like my mother used to say, क्या हो जाएगा? मैं कहती ये हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर ये हो जाएगा, फिर क्या होगा? मैं एंड में मैं कहती थी, फिर मैं मर जाऊंगी. She would say, मर गई तो कहानी खत्म. जब तक जीवित है तब तक तो जिंदा रहे. That has stuck with me subconsciously. And their main concern was, what if this, what if that? I said, that you don't know the next moment. With anybody, even the healthiest person, you don't know. But पहले से manifest ये तो नहीं करो ना कि I strongly believe whatever you manifest, usually the universe takes it. So manifest good. अपनी तरफ से positive करो, अच्छा करो, have faith, and then whatever comes, take it. That's तो what I. जो लोग आपको सुन रहे थे वहां पे, उनमें से किसी का कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको याद रहा? Question mainly यही था कि how do you do it? Which like I said, for me, there is no answer to that because this is how my thinking has been always. I look at glass half full. मेरे को जब तक ऐसे नहीं सामने दिखाओगे empty, तब तक मुझे दिखता नहीं है generally. So that was their question, and that's what they took from there. They said, we have to keep a thinking positive. I said, as long as you keep yourself aligned, things will be better. And stop this Google and all. वो बहुत अच्छी चीज भी रही है, पर हम एक तरह से थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन है, unnecessary information which a patient does not need. And that's what my daughter has on her desk. She has this. Don't mistake me for the Google. I have done 10 years of research and study, which is a right thing. So I just followed my oncologist, my surgeon. Follow your doctor. अपने डॉक्टर आप नहीं बनो. That you will go crazy. And it worked for me. Wonderful. गीता जी, मैं आपको एक तो धन्यवाद इसके लिए देना चाहूंगा कि I was also reluctant in asking you whether you would like to open up and share this path. No, I want the awareness, and that is my reason. अगर मुझे कुछ हुआ है तो I would like to talk about it, not hide it, which is a general tendency. I had to bring it up. Many people do that. Then जब किसी को होता है तो उसको लगता है अरे मेरे को हो गया. बहुत लोगों को हुआ है, बोलते नहीं है. But it's good to have a dialogue so that other people understand too कि it's okay. So, okay, will it be okay to request you to sing a song before we conclude? Okay, I would sing this, my mom's bhajan. I really like it. ओम रस बरसे रे मनवा, प्रेम रस बरसे रे मन चातक, रे मन चातक क्यों तरसे रे मनवा.
मेरे से बरसे। क्या बात है, क्या बात है। तो ये जो रस बरस रहा है वो जीवन का भी है, उत्साह का भी है, आशा का भी है, ये भी है। और आस का भी है, This और is right फूल before का the surgery. It was like, okay, I got it. वेरी गुड। सो lots and lots of claps for Gita Setia ji Thank you for so being so what much, she अशोक जी। is. आपने सिखाया एक सेंटेंस जो मैं इधर बोलूंगी, आज के आनंद की जय हो। क्या बात है, क्या बात है। So ये जो आनंद है वो कैंसर से अलग हटके जब हम बात करते हैं, जनरली स्पीकिंग, तो हर एक क्षण में, हर एक सांस में ये जो एक हमेशा बहता हुआ आनंद है, उसके प्रति हम सजग रहने का अभ्यास करते हैं और कई बार फेल हो जाते हैं। पर ऐसे समय में जहाँ से आप निकली हैं, उसमें इस साहस में रमना कि उस आनंद के प्रति जागरूक रह पाए, वो अ, विशेष रूप से आपको। वो भी ईश्वर की दया है अशोक जी, वो भी उसकी कृपा है जो एक रख पाया मुझे अलाइन एंड रख रहा है। So तो गीता जी को धन्यवाद देते हुए आप सबके साथ ये उनकी यात्रा को जानने का जो अवसर हुआ इतने क्रमबद्धता से, उसके लिए भी उन्हें पुनः धन्यवाद। और हम सब कहीं ना कहीं एक तो ये बात पुनः अपने आप को याद दिलाते हैं कि आशा जो है उसमें अपने आप में बड़ी शक्ति है, और बल्कि आशा ही जीवन है। अगर हम निराश हो गए तो फिर बात खत्म हो गई, तो बात तो चालू रहनी चाहिए, और बात बहुत दूर तक जो जाने वाली है, उसके साथ सुरों की खनखनाहट भी है। गीता जी से और संवाद विशेष संदर्भों को लेकर रसमयता से करने का अवसर आता रहेगा। पुनः बधाइयाँ। धन्यवाद अशोक जी। थैंक यू ऑल। नमस्ते।